Good morning, students. Class 12th. In the last thing, we have done about the tangents and normals and the typical problems. And right now, I am discussing with you the typical problems on increasing and decreasing functions. So, let me start our question, that is, prove that the function of f given by fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1 मीन्स इस इंटरवल के अंदर इस दिए गए इंटरवल में फंक्शन ना तो कंप्लीटली ना तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, whenever the interval is given and it says like this कि neither increasing nor decreasing, it means your interval whenever divided into the increasing and decreasing, then you overall say it's neither strictly increasing nor strictly decreasing। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इंटरवल में पूछता है कि बताइए क्या उस दिए गए इंटरवल में क्या वो कंप्लीटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, उसका मतलब ये होता है जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा इंटरवल सब इंटरवल में डिवाइड हो जाता है और वहाँ हमें जब फाइंड आउट होता है कि कुछ इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कुछ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जिस वजह से हम ओवरऑल इंटरवल के लिए क्या कह देते हैं कि इट्स नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन राइट नाउ, दैट इज fx is equal to x square minus x plus 1. Okay, so what is the slope of that? That is f dash x, of course, 2x minus 1, you know the step of the function, and put that f dash x equal to 0, we get the values of x, that is half, and that half belongs to, for that interval, उस intervals में आने चाहिए। So what are the possible intervals are? First of all, you have to make the interval that is less than half and more than half, because we have only one values of x. You know, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको इंटरवल से डिवाइड करते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर देखते हैं सबसे पहले क्या इंटरवल बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। ओके, सो वी हैव द ओनली वन पॉइंट, तो इट इज इजी टू मेक द इंटरवल दैट इज लेस देन हाफ एंड मोर देन हाफ। सो फर्स्ट वन वी हैव चेक आउट द डेरिवेटिव f dash x at less than half, x less than half, that is dy over dx. What we get? dy over dx, that is f dash x, of course यार f dash x is less than 0। सर कैसे चेक किया? अब लेस देन हाफ का मतलब यार 0 रख के देखो f dash x में, यहाँ रख के देखो, यहाँ साइन चेक करना है, वैल्यू चेक नहीं करनी, जस्ट चेक द साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बी केयरफुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन हाफ में 0 पुट करके देखता हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस लेस देन 0 है, इट मींस द विच इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑफ कोर्स f dash x अगर लेस देन 0 है तो ये क्या शो करता है, इट शोज द strictly decreasing function. Next one, more than half, that is dy over dx, that is f dash x. We get f dash x is greater than 0, which is a strictly increasing function. Okay, decreasing function and increasing function. Okay, so at last but not the least, क्योंकि ये हाफ इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप देख रहे हो कि लेस देन हाफ का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और मोर देन हाफ का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इट मींस दैट ओवरऑल इन दिस इंटरवल में जो -1 to 1 है, ऑफ कोर्स वो हाफ आएगा, इंटरवल ऑफ कोर्स क्या बनाएगा यार, हाफ से लेस -1 to हाफ। ओके, तो मैं इसको और प्रॉपर्ली लिखूं, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 to half एंड दिस वन इज हाफ टू 1। सो व्हाट वी कैन से कि आपके सब इंटरवल्स में आपको ओवरऑल किसी में इंक्रीजिंग किसी में डिक्रीजिंग दिख रहा है, बट वी हैव द इंटरवल -1 to 1। ओवरऑल इस दिए गए इंटरवल में वो कंप्लीट इंक्रीजिंग नहीं है और कंप्लीटली डिक्रीजिंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल से द गिवन फंक्शन एट -1 to 1 इज neither strictly increasing nor strictly decreasing। Okay, so let me start another problem related to this. So what is the next problem? Let us find the intervals in which the function f(x) is equal to sin x plus cos x, and what is the condition over x, that is greater than or equal to 0 less than or equal to 2 pi, is either strictly increasing or strictly decreasing. Means we have to find the intervals. So students, you remember how can you find the intervals? Of course you know the steps. First of all, we have to do the derivative of the given function, then put that derivative equal to 0 and get the different values of x, of course that values of x, and then possible values of x we will get the
different intervals. Okay, so first of all, what is the function we have? That is fx equal to sin x plus cos x. And what is the condition on x? Okay, so where x can be written like in the interval form, that is of course 0 to 2 pi. Okay, so that is f dash x cos x minus sin x, and put f dash x equal to 0. We get a tan x equal to 1, and because we have the whole cycle that is 0 to 2 pi, because tan x equal to 1 in the second quadrant, first quadrant and the third quadrant. So we get the values of pi x, that is pi by 4 and 5 pi by 4, and both are belongs to that interval 0 to 2 pi. So what are the possible disjoint intervals? Remember the students, whenever you will make the intervals, that must fit disjoint. Okay, so first of all, look at this. The interval is given the closed, that is 0 to 2 pi. But values of x, we have to just make an interval in the open interval, because they will cannot be, they must be disjoint, you can say. So first of all, that is 0, so 0 to pi by 4. So just look at this, that is 0 closed and pi by 4 open. Second interval is pi by 4 open to 5 by 4 open. Okay na? And the third one is 5 pi by 4 to 2 pi closed. So just you have to remember how can you make the interval, and that must fit disjoint. Next one, just at these intervals we will check the sign of f dash x, whether it is positive or negative. So first one we have x belongs to 0 to pi by 4, it means 45 degrees से less आपके पास conditions हैं. f dash x we have cos x minus sin x. Just look at the students कि cos x 0 to pi by 4 में values of course क्या रहती है, वो greater रहती है rather than sin x की. Okay, that's why it is positive. क्लियर कि cos x के 0 से 45 पे ज़्यादा रहती है rather than, देख लो 0 पे देख लो ना 1 रहती है, उसके बाद वो डिग्री से चली जाती है. तो cos की वैल्यू 45 से पहले ग्रेटर रहेगी, 45 के बाद 45 से पहले साइन की वैल्यू कम रहती है. दैट्स व्हाई उनका डिफरेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा. डोंट चेक आउट द 45 to less and 0 to greater. Okay, just take the sign over there, just take the 30 degree angle, you will get the positive sign. Okay, so what we can say that fx, we check the sign of f dash x. Whenever we get the f dash x is greater than 0, then we can say the given function fx is strictly increasing on that 0 to pi by 4, 0 closed and pi by 4 open. Second one, that we have pi by 4 to 5 by 4 means 45 to 135, 5 by 4. Okay, this one that is 235, 225. तो इस लाइन में पूरा, यानी कि उसने किसको ऑक्यूपाई कर दिया, इस पूरे क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट का हाफ, सेकंड कंप्लीट और थर्ड का हाफ. उस कंडीशन में क्या पॉजिटिव है? ऑफ कोर्स वहां पर साइन की वैल्यू ग्रेटर रहने वाली है. दैट्स व्हाई जब साइन की वैल्यू ग्रेटर होगी तो cos की लेस होगी, दैट बिकम नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0. इट मींस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन pi by 4 to 5 pi by 4. Next one we have that pi by 4 to 2 pi. Of course, that is the fourth quadrant, and the fourth quadrant, that is, we know cos is always positive and that has a greater value. Sin is negative, so definitely you will get that sin is negative. Negative become positive, and cos is already positive. Overall, what we get, of course, positive value in the fourth quadrant. It means the f dash x is greater than 0. It means that given function is strictly increasing on 5 pi by 4 open to 2 pi closed. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो इंटरवल्स में आया है. तो एट लास्ट आप इन सबको यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है. Therefore, look at this, what I am writing here, that is, therefore fx is strictly increasing on 0 closed pi by open union 5 by 4 to 2 pi closed. Okay, just be careful about it. And fx is strictly decreasing on, that is only pi by 4 to pi by 4. Oh. So whenever you get more than one interval when the function is strictly increasing, just make them with just combine them using the union symbol. Okay, that's it. So student, I hope आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करोगे, अच्छे से देखोगे यार, ठीक है. Well, let's have one more questions right now. So students, just a simple question is there, but some typically point is there. Don't confuse about it. That is, prove that the function fx becomes log mod of cos x. So first of all, you will confuse about the modulus of cos x. So don't panic about it. It's strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on 3 pi by 2 pi. Strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on 3 pi by 2 to 2 pi. We have to prove.
So first of all, students, what have you do, what we have to do with the mod of cos x? Of course, मॉडुलस फंक्शन इसलिए डिफाइन किया है स्टूडेंट्स कि log फंक्शन जब भी डिफाइन होता है पॉजिटिव रियल के लिए डिफाइन होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन द log of cos x एज अ सिंपली log of cos x। ओके, एज क्योंकि इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा बिकॉज log फंक्शन कभी भी नेगेटिव से डिफाइन नहीं होता है। log of mod cos x is equal to log of cos x as you have to just do the definition of it कि log x is x greater than 0, log x is defined when x is greater than 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आप डिफाइन जरूर कीजिएगा। इट मींस यहाँ पर आपने सिंपल मॉडुलस ऑफ ए cos x को cos x लिखा है, जानबूझकर लिखा गया था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है इसमें सिर्फ log sin x दिया गया है, वहां भी तो आप सोच सकते हो कि सर sin x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों होती है, बट इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, सो just do the simple as the differentiation, that is log of cos x, that is 1 over cos x, and cos x is minus sin x, and that we have minus 10x। okay, and the interval we just check the sign at x belongs to 0 to pi by 2 and dash x less than 0, it means f(x) is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and 3 pi by 2 pi, of course at dash x is greater than 0। how? of course the tangent वहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, that's why it is greater than 0, it means strictly increasing on this, hence proved। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए होंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिएगा, कोई डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद द नेक्स्ट important task, important questions like local maxima and minima, then global maxima and global minima, and another word you can say absolute maximum and absolute minimum। ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।